arguably believe is the greatest success of this government, and it's historic in many ways, the UPI revolution. There's another revolution I want to talk about, and also my fanboy moment, the Mr. Overperformer award to Mr. Nitin Gadkari, what he's doing with the highways. Man liked across the ideological spectrum, and India's highways are a testament to what he's doing. So want to understand, as an investor like you who is betting so big of this being India's 21st century, like I'm excited about so many projects, but the most like next year's iconic expressway between the financial capital of India and the capital, which is going to reduce the journey from 24 hours to 12 hours. So as an investor, can you tell us, with all these incredible highways that Mr. Gadkari is making, how is the economy going to even, jet speed into some other orbit? So highways are a huge productivity multiplier. And it's, I would say it's like very hard to sort of calculate or estimate even what is the impact of the build out over here. And if we go back to 2007, 8, 9, that period, the number of terror attacks that were going on in the country were just shocking. Absolutely. I mean, I had lived through that. I was in India when that was going on, 26/11, and even before that, and even after that. Right. So we should not take order and security for granted. So a lot more things need to be continuously done for 20-25 years for us to actually achieve what you're talking about. And that, I mean, comes down to having leaders who recognize that, and having leaders who do their job in such a good way, we take their results for granted, which is I think somewhere happening now. Right. We had discussed that in one of our episodes, that nobody talks about this amazing fact that for the last 9 years, and I hope continues for hundreds of years, no non-conflict zone of India has faced a terror attack. That's remarkable, right? No non-conflict, no big city, which used to be a norm for 10 years. It had really gotten out of hand actually. In the 2000, that 2005 to 2010 period was just terrible. Absolutely. नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के एक नए एपिसोड में, और मैं हूं आमना बेगम, खालिद बेग के साथ. Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week by Amana and Khalid. Today we're joined by Mr. Rajeev Mantri. Mr. Rajeev Mantri is an economist and an author, an investor. He has contributed on articles on political economy, technology, investing and entrepreneurship to Mint, Swaraj, the Wall Street Journal, Financial Times, the Indian Express, and other publications. Also is a co-author of the book New Idea of India, Individual Rights in a Civilizational State, which he co-wrote with Harsh Madhusudan. Welcome, Rajeev. Thank you, Khalid. Great to be with you guys. Rajeev, I was just watching you the other day on Times Now, and the topic was India touching the $3.75 trillion economy some days back. And now, of course, we know a couple of months back, or maybe last year, we had become the 5th largest economy, and now we're just behind US, China, Japan, and Germany. So I want to take you back to that Times Now clip of yours. And to sum it up, that, in the last 1 decade, the economy has nearly doubled. It was 2 trillion in 2014, and now it's 3.75. What surface level, what are the big factors that has contributed to India making this big plunge in the last 10 years? So I think last 8-9 years have been a period of true transformation across like a number of different industries, sectors, as well as a lot of macroeconomic changes that have taken place in India. I think the biggest of which, probably if I had to name one thing, has been the formalization of the economy and the financialization of the economy. तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो इकोनॉमी की पहले रजिस्टर नहीं हो रही थी, या फिर इट वाज इन अ kind of under the radar, it was going on, or in the black economy it was going on, we can even call it that. Sure. What is happening now is that this is now happening in a formal sense. तो पहले जो लोग बिजनेस कर रहे थे कैश इकोनॉमी में, वो लोग फॉर्म्स रजिस्टर कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्मेट में कर रहे हैं, या फिर एलएलपी में कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर रहे हैं. और उसके साथ साथ उन लोग टैक्स नेट में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं. तो दिस टू मी हैज बीन द सिंगल बिगेस्ट शिफ्ट in the last 8-9 years.
where so many small and medium-sized companies are actually coming into the formal system. And that itself is a big support to the Indian state, which is now increasing its tax collections to record numbers. I know a lot of people think it is a negative in a sense, why are we celebrating tax number increases? But the truth is that the Indian state needs the funding, needs the capital to put it into the right areas, which includes areas like defense, security, the appropriate and targeted welfare. तो जब तक हम ये सब सही नहीं करते हैं, तब तक इकोनॉमी में उस तरह का जो है कैपिटल एलोकेशन जो गलत चल रहा था इतने साल तक, एंड जो इतना अंडर फंडेड था इतने सालों तक, वो सही नहीं होगा. तो इन दैट सेंस आई थिंक दिस इज द वन बिग थिंग व्हिच द गवर्नमेंट हैज रियली गॉट राइट. और उसके साथ साथ जो मैंने मेंशन किया, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह की पॉलिसी चेंजेस आए हैं, ट्रेड रिलेटेड चेंजेस हैव कम इन. तो ये सब ले जोड़ के जो है, like you mentioned, in 8-9 years or in close to a decade, we have almost doubled our economic output, and that bodes very well for where we are going. इससे हम जहाँ जा रहे हैं अगले 5-7 साल में, ये बहुत एक्साइटिंग और एक पॉजिटिव फेज है इंडिया के लिए. ओके राजीव जी, अभी आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसमें आपने टैक्स का भी मेंशन किया. तो इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है, मोस्टली वो हमेशा लो रहा है. अगर हम पास में देखें तो 8% होता था, बट इस गवर्नमेंट में फिलहाल जो अभी के डेटा है उसके हिसाब से 11% तक हो गया है. स्टिल इट्स वेरी लो. साथ में हमारा सब्सिडी इकोनॉमी का रेशियो रहता है 8% के अराउंड, विच गोज इनटू पब्लिक सेक्टर एंड नीडेड ऑल्सो. तो जब हम ये सब देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा बैगेज अभी भी है, वी आर इम्प्रूविंग बट नॉट विद उतने अच्छे से नहीं जितना शायद हमें जरूरत है. तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन से और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया को ज्यादा जरूरत है काम करने की, एंड क्यों हमारा टैक्स रेशियो इतना कम है अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो. टैक्सेस एक्चुअली, जो टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया का, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की पहले बात करते हैं, तो जैसे जीएसटी आने के पहले, जीएसटी आया 2017 में आया, जुलाई 2017 आई थिंक इट वाज व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड. तो उसके पहले हमारे यहाँ एक पूरा एक तरह का एक मिशमैश बोल लीजिए, खिचड़ी बोल लीजिए, मतलब कि इट वाज अ मेस. द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो हमारे यहाँ था, तो उसका पूरा सुधार हुआ जीएसटी आने के बाद. और जीएसटी जिस तरह से अब गति पकड़ रहा है, अब करीब करीब हर महीने 1.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट हो रहा है जीएसटी में. और ये एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम भी है, मतलब कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैं मानता हूँ कि पहले से बहुत अच्छी हुई है. इसके बारे में हम कंप्लेंट्स सुनते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा है वैसा है. बट मेरा मानना है कि हमें इसकी तुलना करनी चाहिए इसके पहले क्या था उसके साथ. और जो उसके पहले था वो तो बिल्कुल ही एक, मतलब इट वाज अ डिजास्टर एक्चुअली, इतने सालों तक जो चल रहा था. तो जीएसटी जो है बहुत ही अच्छा रिफॉर्म रहा है. उसकी वजह से बहुत सारी, मैंने जैसे कहा, छोटी फर्म्स जो है रजिस्टर कर रही हैं, टैक्स नेट में आ रही हैं, मतलब कि क्योंकि सब अपने वैल्यू चेन में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं. तो एक इनबिल्ट एक तरह का इंसेंटिव है कि जो उसमें जुड़ेगा नहीं वो टैक्स क्रेडिट ले नहीं पाएगा. तो इसलिए ज्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, और वो अब आंकड़ों में भी आ रहा है कि 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हो रहा है हर महीने. तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो ये है. डायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट ने एक बड़ा डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स काट किया था, और उसका भी अच्छा बहुत रिजल्ट रहा है कि ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है. टैक्स काट करने के बाद भी रेवेन्यू बढ़ा है. इसको क्लासिकली बोलते हैं इकोनॉमिक्स में लाफा कर्व. तो लाफा कर्व इफेक्ट जो है वो हमने देखा है कि इट्स एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड विद इन द कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स. तो अब तीसरी जो एरिया है वो है पर्सनल इनकम टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स में. तो उसमें भी मेरे को लगता है कुछ गति कम रही है रिफॉर्म्स की, कुछ चेंजेस कम रही है. इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक गलती भी की थी मेरे हिसाब से, जब उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे 4 साल पहले. तो उस गलती का भी कुछ सुधार हुआ है इस साल के बजट में, जब टॉप रेट टैक्स कम हुआ था
पर मेरे को लगता है ओवरऑल डायरेक्ट टैक्सेस में भी, पर्सनल इनकम टैक्सेस में भी जिस तरह का जीएसटी का रिफॉर्म आया था, उस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है। क्योंकि अभी जो जैसे कैपिटल एसेट्स का जो टैक्सेशन होता है, उसमें बहुत कुछ एक तरह की अनॉमलीज बिल्टअप हो गई है। इंडियन इकोनॉमी जो आज के दिन में ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है, उसको एक जरूरत है एक मॉडर्न और एक नए टैक्स कोड की, नए डायरेक्ट टैक्स कोड की। तो मेरे को लगता है इसमें भी काम होना चाहिए, और शायद होता अगर ये पिछले 2-3 साल जो महामारी का समय जो गया, जो ग्लोबल पैंडेमिक का समय जो गया, शायद उसमें कुछ मूवमेंट होता अगर इस तरह का शॉक नहीं होता, इस तरह का एक्सटर्नल शॉक नहीं आता। तो मेरे को लगता है नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि वी फिक्स आवर पर्सनल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड इवन ऑन द कॉर्पोरेट साइड गेट रिड ऑफ एग्जेम्पशंस। तो इन दोनों एरियाज में और सुधार करने से मेरे को लगता है वी विल सी द सिमिलर पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट आर बीइंग विटनेस्ड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरी एरिया जो है वो जो है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है, जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें से कोई रोल नहीं रहेगा गवर्नमेंट का। सारी जो पीएसयूज हैं उनका या तो डाइवेस्टमेंट कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, या फिर उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर वो कोई बहुत सारी सिक कंपनीज जो है जिनको कोई अगर लेना ही चाहता है तो उनको गवर्नमेंट शट डाउन करके उनका एसेट वगैरह सेल कर देगी। और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं और उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज रहेगी। तो इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अब तक नहीं हुआ है, और अब पॉलिसी भी आए 3 साल हो गए हैं, और अगर हम ये सोचे क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अगेन मे बी वी कैन एट्रीब्यूट टू द पैंडेमिक, वी कैन एट्रीब्यूट टू द वॉर इन यूक्रेन। तो मेरे को लगता है 2024 के बाद ही, इलेक्शन के बाद ही, जब चुनाव पूरा हो जाए, तो अगर ये सरकार वापस आती है तो फिर दे विल प्रॉब्ली टेक इट अप। तो आई वुड earmark reform of direct taxes and implementation of privatization policy as the 2 big shifts that are pending now. और ये पूरा करने से मेरे हिसाब से शायद इंडियन इकोनॉमी की पूरी काया पलट जाएगी। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा से एक पीएसयू का बहुत डोमिनेंट रोल रहा है इन इंडियन बिजनेस। तो वो डाइल्यूट होते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है। और अब जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम पूरा एग्जिट कर देंगे, इन सब इंडस्ट्रीज में पीएसयू का रोल रहेगा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है इंडिया में। और अगर ये होता है, मे बी उसके लिए 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, बट अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है तो इट विल रियली ट्रांसफॉर्म द बिजनेस लैंडस्केप इन द कंट्री। Rajeev, I remember on Abhinav Prakash's podcast, you were very excited the day Air India was privatized. I mean, that was a big white elephant in the room, and you spoke passionately about how this should have been done decades back, and most Indians did because we were flagging a dead horse. But recently, if I'm getting this correct, again we tried to bail out BSNL. Was it BSNL or someone else, right? No, so you're right. So BSNL, I think it has. Does that hurt you? Because that's just going there is a slight nuance over there, in the sense that most of that money is for spectrum. So basically, BSNL has been given spectrum. I know that 89,000 or 90,000 crore figure was being thrown around, but most of it is essentially government giving BSNL spectrum. Now, so we can debate whether the government should give a scarce resource like spectrum to a government company. Maybe it can be better utilized by private players. But it is not a cash transfer of 90,000 crore rupees or 89,000 crore rupees as was being made out. ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट से वो कैश निकल के उस कंपनी में जा रहा है, ऐसा नहीं है। खाली उनको स्पेक्ट्रम दिया गया है, और वो स्पेक्ट्रम का शायद उपयोग करेंगे, शायद नहीं करेंगे, वो एक अलग चर्चा हो जाती है, पर ये कैश नहीं जा रहा। Suddenly it doesn't feel that bad as laymen when we were seeing that news. So yeah, I mean, I think 99% of the amount, or probably more than 99% of the amount, is basically allocation of spectrum. So the government gives them money from one hand, and it comes back to the government as a spectrum payment from the other side. So it really is, I mean, it's not really a welfare in my opinion, or a propping up of a PSU in my opinion. Like I said, we can debate whether the telecom sector needs a government company. We can debate whether the spectrum will be best utilized by a PSU like BSNL. That's a different and a good debate to have.
I continue to think that probably there's no need for a government-owned telecom player. That's my view. Other people can say कि नहीं security consideration है, ये है वो है. तो जैसे मैंने कहा, that's a good debate to have. But yeah, it's not in terms of cash. Is the limited point I wanted to make. Okay. Rajeev, there was this podcast I was seeing a few days back. It had one of Pakistan's most prominent economists, Dr. Umar Saifi, a very renowned name. And he had an opinion. Of course, he spoke about the UPI revolution in India. And he spoke about, he had an analysis about demonetization and how that also helped in, curbing money laundering, terror funding, cracking down on black money, and, getting that all. Now, of course, economists who suggested that here were dismissed as, cheerleaders of the current government. But here is Dr. Umar Saifi, who has a certain reputation even in the, global space. So I found that interesting. So as a fellow economist of India, could you speak about both? I mean, UPI, I also feel, is that arguably the greatest, achievement of this government? Because I think, you're arguably the most technologically advanced country right now since the last 5-6 years, right? Pakistani bloggers. In payments for sure. I mean, India is a model for, I think, not just all the emerging economies, but even the advanced economies. Exactly. Our payment system is truly best in class. And you and on demonetization, actually, on demonetization. So I'm not an economist actually, so I should just qualify that. Okay. I'm not an economist by training. Okay. But even when demonetization happened, I had supported it. I said there are certain behavioral sort of changes necessary for people to give up like cash use or to reduce the cash use. जहां लोगों को इतनी आदत लगी रखी है कि हम तो कैश में काम करेंगे कुछ भी हो जाए, तो और कैश इकट्ठा करते जाएंगे और मतलब एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सपोर्ट सिस्टम भी बन गया था कैश इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो उसको एक डिमोनेटाइजेशन से धक्का लगा और मेरे को लगता है कि इसकी वजह से देयर इज अ बिहेवियरल शिफ्ट एज वेल. नाउ वी शुड नॉट सी इट इन आइसोलेशन. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ओनली डिमोनेटाइजेशन कॉज्ड इट or only X, Y, or Z has caused the shift to digital. There are many factors, including most recently the pandemic effect. That is also a big accelerator for digital payments, no question. But my view is that demonetization also was a big part of it. If we didn't have demonetization, certain types of habits which people in India have kind of just deeply ingrained, so उसको कैसे बदला जाए, मतलब कि मेरे को लगता है कि ये एक तरीका था, उससे डेफिनेटली एट द मार्जिन कुछ फर्क पड़ा है. मैं जानता हूँ लोगों को, जो लोग सपोज कोई स्मॉल मीडियम बिजनेस कोई रन कर रहे थे, सब कैश में रन कर रहे थे. मान लीजिए कोई साल में 50 लाख का टर्नओवर करती कंपनी कुछ 5 लाख रुपए कमाती है, ऐसे करके कुछ कंपनी होगी, ऐसे करके कुछ बिजनेस ओवर आ रहा. तो उस बिजनेस ने डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या किया कि ठीक है रजिस्टर कर लो. उसके साथ साथ ही जीएसटी आया, नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, फिर 1 जुलाई 2017 if I remember correctly GST was implemented. So demonetization followed by GST, both these events gave a big push to formalization, and you compound all of these efforts together. एक यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, डिजिटल पेमेंट आ गया जो इतना आसान है, सबके लिए आसान है. मतलब whether you're a small business, whether you're an individual user, even for large businesses, I mean, RBI has done an extraordinary job in supporting all kinds of online payments, bank transfers. I mean, nowadays we have 24/7 facilities available where businesses can run their account online and make payments wherever they like. I think we are among the few countries which have such sophisticated systems. तो ये सबको जोड़ के मेरे हिसाब से दिखना चाहिए. We should not look at any one thing in isolation, but when you look at it together, and then you realize that everything has contributed to this transformation, and probably everything was necessary. क्योंकि अगर आप behavioral change नहीं लाएंगे तो लोग वो क्यों लेंगे? मतलब those who are used to dealing in gaddis, जो नोट लेके घूमते हैं थाक में, उन लोग को कैसे लगे कि ये नहीं करना चाहिए? तो अब शायद अभी भी कुछ लोग करते होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा चला गया, but definitely, I mean, if you look at even the decline in the use of ATMs, I mean, this data is put out by RBI itself. नए ATM लगा ही नहीं रहा है कोई. क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि लोग यूज नहीं कर रहे हैं. तो sometimes what the result is seen sometimes in what is not being used, and
that is not being measured in a accurate manner. The decline in use of ATMs is a proxy for that actually. कि आजकल जो बैंक की जो ब्रांचेस बन रही है वहां पे शायद ATM मशीन्स कम लगती है, या फिर बहुत जगह जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब लोग फोन पे कर रहे हैं. Yeah. तो मेरे हिसाब से मेरा हमेशा मानना रहा है, इनफैक्ट आई हैव इवन रिटन अबाउट दिस फॉर कपल ऑफ न्यूज़पेपर्स, कि व्हाई इट वाज अ इम्पोर्टेंट स्टेप. एंड आई थिंक sometimes to shake people out of their ingrained habits, drastic measures are required. Sure. I actually add something to it. So like my experience when I was in Dubai, तो दुबई में मैं इतना याद करती थी यूपीआई पेटीएम को पूछो मत, क्योंकि वहां आप जाते तो या तो बिल्कुल कार्ड. बिल्कुल, मतलब कहीं पे भी अगर दुबई तो आई वुड से कि थोड़ा सा probably is better. I mean as a for locals maybe it's slightly better. Yeah. But अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं जाएं, वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो वहां तो एंटिक्वेटेड है काफी सिस्टम्स. If you see यहाँ the US, for example, US में तो it's a very very antiquated approach. मतलब there is no bank to bank instant small value transfer mechanism at all. In fact, over there people are saying we should adopt UPI based technology and learn from the exactly. Indian Central Bank and the Indian government. Yeah, सेम हुआ. मतलब नाउ आई एम जस्ट लाइक इन लंदन, तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया, चलो पेमेंट सिस्टम इन एट द स्टोर इज वेरी गुड बिकॉज दे हैव दिस रिवॉल्व थिंग हियर एज वेल. बट अगर आपको एटीएम में पैसा जमा करना है तो मेजोरिटी ऑफ द एटीएम पैसे डिपॉजिट नहीं करती है. लाइक इंडिया में किसी भी एटीएम पे मैं जाती हूँ तो वो पैसा डिपॉजिट कर लेते हैं. एंड आई वाज सो सरप्राइज कि यूके बिल्कुल. जैसे कंट्री में फैसिलिटी नहीं है, एंड बैक इन इंडिया वी हैव दिस फैसिलिटी. प्लस मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही थी पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में, एंड आई वाज लाइक जस्ट आई विल पुट माय पासवर्ड एंड एवरीथिंग, इट विल वर्क. मुझे बैंक से कॉल आया रात में कि व्हाई यू आर ट्रांसफरिंग मनी ब्ला ब्ला. आई सेड व्हाट्स गोइंग ऑन. दे सेड वी हैव टू पुट ऑल द चेक, सो मेनी लेयर ऑफ चेक, तो कोई फ्रॉड ना हो जाए. एंड आई सो सरप्राइज कि इंडिया में तो चुटकियों का काम है, यूपीआई में जाके मैं इस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफर करती हूँ. सो लाइक देयर इज सो मच. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस एस्पेक्ट को समझना कि अगर ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं चुटकियों वाला काम नहीं होता तो क्या छोटे छोटे बिजनेसेस इसको अडॉप्ट करते? नहीं करते. एग्जैक्टली. तो इंडिया हैज ट्रूली बीटन कैश. मतलब व्हाट वी डेवलप विद यूपीआई बीट्स कैश. इट इज इजियर देन कैश. तो इसीलिए लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. इतना अच्छा है. एग्जैक्टली. और एक चीज और है, लाइक मोस्टली यहाँ यूके में लोग कार्ड यूज करते हैं, बट देयर आर छोटे छोटे जो शॉप होते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, वो डिमांड करती है हमें कैश ला के दो. तो मुझे ये हंसी आती है कि इंडिया में तो मैं गोलगप्पे खाने जाती हूँ तो बोलता है कि यूपीआई से दे दो. हाँ एंड नहीं, दिस और वो भी अगर अपने देखें क्यों हो रहा है ऐसे, तो कार्ड से क्या होता है, कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं. क्योंकि छोटी फर्म्स जो हैं और छोटे शॉपकीपर्स हैं उनको चार्ज देना पड़ता है. तो वीजा और मास्टर कार्ड के लिए तो बहुत बढ़िया बिजनेस है ये. उन लोग एज कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर्स दे आर रनिंग अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, कि जहां पे भी दे आर लाइक लैंडलॉर्ड्स, द मॉडर्न लैंडलॉर्ड्स एक्चुअली इन सम वेज. कि कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें इनका 1.5-2% जाता है इनके जेब में, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो. तो नाउ दैट्स व्हाई अ स्मॉल बिजनेस, मतलब कि जिनकी मार्जिन्स एनीवे कम होती है, कमाई ऐसे भी कम होती है, तो अगर वो 1.5-2% इनको देने लगेंगे तो खुद क्या कमाएंगे फिर. तो इसलिए यूपीआई का जो पूरा डिजाइन है एक तरह से इट्स फ्री, and it will probably continue to be free for some time to come is my view. In fact even the regulators and all have always said this कि वो free रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसको यूज करते जाएं. तो because it is at no charge for the merchant, and rather let me correct myself, it is at no charge compared to the card networks. So for that reason I think it is very much like the adoption has really been fueled by that. Yeah, I think that's the most important thing. हाँ, Now मतलब अगर कोई सपोज अगर कोई साल का अगर 2 लाख रुपए कमाता है और उसको अगर 2% देना पड़े कोई कार्ड नेटवर्क को, तो इट विल रियली पिंच. अब मुझे समझ में आया. मैं कहती थी ये लोग मुझे कैश क्यों मांग रहे हैं, ये इलीगल टैक्स नहीं देना चाहते. बट नाउ आई अंडरस्टैंड, वो पैसे बचा रहे थे. नहीं, डेफिनेटली वो कार्ड नेटवर्क और ये मतलब इंडिया के लिए भी इट्स अ इशू, बिकॉज कार्ड नेटवर्क्स, फॉरेन कार्ड नेटवर्क्स, एंड
do we want our payment rails, our payment systems to be in the control of foreign companies? That's also like, it is I mean, we have good relations with all countries, Yeah. but something as critical as this to their economy should not probably be in foreign hands. That is also one consideration, important consideration. You want to ask your next question, Khalid? Yeah. We spoke about, of course, what I arguably believe is the greatest success of this government, and it's historic in many ways, the UPI revolution. There's another revolution I want to talk about, and also my fanboy moment, the Mr. Overperformer award to Mr. Nitin Gadkari, what he's doing with the highways. Man liked across the ideological spectrum, and India's highways are a testament to what he's doing. So want to understand, as an investor like you, who is betting so big of this being India's 21st century, like, I'm excited about so many projects, but the most, like, next year's iconic expressway between the financial capital of India and the capital, which is going to reduce the journey from 24 hours to 12 hours. So as an investor, can you tell us, with all these incredible highways that Mr. Gadkari is making, how is the economy going to even, jet speed into some other orbit? No, so highways are a huge productivity multiplier. And it's, I would say it's like very hard to sort of calculate or estimate even what is the impact of the build out over here. And I would say not just highways, civil aviation, railways, ports and shipping. Har area mein infrastructure mein itna kaam ho raha hai. Highways, obviously, we experience it directly. So, we can all appreciate, and hats off to Nitin Gadkari. I mean, an extraordinary job. But along with that, there's like a kind of, I think, whole of government approach ki you have to connect the country. So even, whether it's northeastern India, whether it is Jammu, Kashmir, Ladakh, whether it is like central India, western India, I mean, parts which were like, let's say, जहाँ पे जाना आना मुश्किल था पहले, इसलिए लोग शायद जाते नहीं थे, वहाँ पे अब इतने अच्छे highways बन गए कि people are driving nowadays from like places like Hyderabad to Bombay and Pune. You can have a very good drive if you are, and then obviously the civil aviation connectivity is improved so much. The flights are available. कि हर जगह एयरपोर्ट खुल रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है. तो इसलिए तो अब जैसे अगर कोई पहले 15-20 साल पहले अगर कोई जाना भी चाहे, सपोज किसी को जाना है, काशी जाना है या फिर ले जाना है या फिर डिब्रूगढ़ जाना है नॉर्थ ईस्ट में कोई कारण से, तो इतना मुश्किल था वहां पहुंचना कि कोई सारा दिन लग जाए वहां पहुंचने में. ऐसे करके टाइम लगता था कि there was no pathway, whether air or road, which was fast enough. Nowadays there are direct flights. Nowadays there are like world-class highways and expressways. So that is creating tourism in the country. तो जैसे लोग कमा रहे हैं, उन लोग घूम भी रहे हैं इंडिया में, देख रहे हैं, देखो अपना देश जो कैंपेन जो है, which is actually making it very easy to sort of explore the country. तो मतलब इसका जो productivity multiplier impact होगा for businesses, I think it's like just going to be something which people can only underestimate. In my view, they can't overestimate it. It's one of those things, because the long-term impact of this is just something else. So we should look at it in this way: India has never been so connected, digitally or physically. आज के दिन में जो वॉइस एंड डेटा कनेक्टिविटी है, और उसके साथ साथ जो लैंड एयर रेल कनेक्टिविटी आ गई है, इतनी अच्छी स्थिति भारत में कभी नहीं थी. मेरे को याद है, मतलब आपको तो याद होगा 15-20 साल पहले वॉइस कॉल्स वर एक्सपेंसिव, डेटा तो भूल ही जाओ, इंटरनेट कितना एक्सपेंसिव था. तो 15 साल पहले क्यों, मतलब 10 साल पहले भी इंटरनेट 4G डेटा कितने लोगों के पास था. Now we are going towards billion plus users having 4G connection. Along with that, even some of the hard to reach areas which used to be hard to reach are now linked by road, air, rail, faster trains in rail. So all of this has an enormous impact in terms of for citizens, ease of living, for businesses, cost of sort of moving goods around, cost of doing business, and even for internally the tourism economy, it's a huge flip. So I mean, I think you are right. This is probably one of the greatest credits to this government in what they've achieved in infrastructure.
Right. Yeah, On the airports, there's an interesting statistic that we had 74 operational airports in 2014, and now in just 9 years, it's doubled to 148. That's like adding Right. another 74 मैंने देखा airports था in वो. 9 years. That's नहीं, इट्स incredible. फिनोमिनल, इट्स फिनोमिनल. और इसलिए मतलब आज के दिन में लोग सोचते भी हैं कि अगर सपोज कहीं ट्रैवल करना है इंडिया में, फ्लाइट्स मिल जाती है तो 3 दिन के लिए कहीं चले गए. अब उसका उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इट्स इजियर, सो समवन इज स्पेंडिंग मनी इन इंडिया. तो जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहां पे कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, कोई छोटे रेस्टोरेंट में, होटल में किसी की कमाई हो गई, कोई टैक्सी वाले को कुछ मिल गया. तो ऐसी तो मतलब once consumption keeps increasing and it reaches these pockets which were earlier being ignored, तो ऐसी तो the whole country kind of raises its income level. true. Even recently, like my extended family, they live in a very small village in Banaras, Kashi. तो वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मंगलपुर. इट्स अ मुस्लिम मेजोरिटी विलेज ओनली. सो आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू लिव हियर देयर एंड वहाँ पे लाइट्स नहीं आती थी. तो लाइट की जो बल्ब होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे. हाँ. तो मेनी टाइम मुझे लालटेन के अंदर या फिर मोमबत्ती में पढ़ाई क्या करती थी मैं. तो वो दिन देखे हैं वहाँ पे. एंड अ फ्यू डेज अगो, फ्यू इयर्स लाइक 2 years अगो, मेरा भाई वहाँ पे गया था. तो वहां पे अभी जैसे हैंडलूम से, वहां पे ज्यादातर बनारसी साड़ी का काम होता है. वो अच्छा. हैंडलूम पूरा पावर लूम में चेंज हो चुका है. पावर लूम लाइक नाउ इट्स मशीन बेस्ड बनारसी साड़ी वाला काम हो रहा है. एंड अच्छा. मतलब लोग ड्रीम नहीं कर सकते थे इसका, क्योंकि लाइट ही नहीं आती थी कि वो हैंडलूम लगाएंगे और वो चलेगा. एंड ये गाँव में हो रहा है. तो माई ब्रदर वाज लाइक कि लिविंग स्टैंडर्ड उस गाँव में भी बदल गई है. एंड आई डोंट नो दिस इज लाइक योगी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है या फिर इट्स लाइक इवेंचुअली होना ही था. But things are changing in India. I mean, my brother said like everybody can see it for their eyes in that. नहीं, बिल्कुल. ये तो एक्चुअली जब ये होता है ना कि when something becomes successful, वो बस लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ बस हो गया, अच्छा है. तो आप सही बोल रहे हैं. मतलब कि शायद 15-20 साल पहले लोग शायद नहीं सोचते थे कि ये सब होगा भी कभी. Yeah. ऐसे ही कितने सालों से चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा. बिल्कुल. तो डेफिनेटली आई मीन मतलब आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टोरीज ऑफ दिस वी आर फाइंडिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. Not जो this सारे season. 7 स्टेट्स जो हैं उनके आपस में कितनी डिफिकल्टीज थी कनेक्टिविटी की. मतलब कि इवन दो द डिस्टेंसेस आर नॉट सो मच, देयर इज हार्डली एनी कनेक्टिविटी देयर. और वो सब वहाँ कितना बड़ा चेंज है. इट्स रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब मेरा लास्ट ईयर असम जाना हुआ था, मैं काजीरंगा नेशनल पार्क गया था. तो इट वाज सो इजी टू गेट देयर. मतलब यहाँ कैलकाटा से जोरहाट डायरेक्ट फ्लाइट थी. वी टुक अ डायरेक्ट फ्लाइट और फिर जोरहाट से काजीरंगा पार्क पहुंच गए 2.5 घंटे में. तो मतलब ऐसे देखिए तो कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है. कितनी दूर है काजीरंगा पार्क? पर कितने लोग पहले जाते थे और कितने लोग अब जा रहे हैं. और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतना आसान हो गया जाना. Easy access. हाँ. One of the इनफैक्ट toughest earlier it was much easier to go to Thailand than to Northeast. This is a fact. कलकत्ता से थाईलैंड जाना ज्यादा आसान था. सिंगापुर जाना ज्यादा आसान था. खालिद, आपके भी स्टेट में अभी तो बहुत टूरिस्ट बढ़ गए. Yeah, there was Kashmir. record tourists in Kashmir last year around 1 crore. And 20 years back, one of the toughest roads, toughest terrains, which is Jammu to Srinagar, and of course Srinagar to Jammu again, used to take 10 hours 20 years back. When I remember taking a bus journey and my stomach completely throwing up. 10 years back, that reduced to 6 hours. Today, 7-8 hours. Today it takes 5 hours, and Mr. Gadkari says he wants to reduce it to 4 hours. And of course, when he says it, it will happen. But for me, Delhi Mumbai is iconic because passing through 5 states, 12 hours, and there'll be a day after 2 years, like you can leave Mumbai in the morning and next day you'll see Srinagar. And actually the highway was very exciting. I think anyone who likes road trips, it's going to be phenomenal. कुछ सालों में मतलब driving around the country will just be amazing. Already काफी कुछ हो गया है, but I think give it another 3-4 years, it will get even better. तो उसके साथ साथ actually even the high speed rail which is coming up. अहमदाबाद बॉम्बे जो बुलेट ट्रेन आ रही है, मेरे को लगता है कि उसके और रूट्स खुलेंगे. तो मतलब जैसे वंदे भारत में हमने देखा है कि कुछ वंदे भारत रूट्स हुए. अब नाउ सी हाउ इट इज बीइंग स्केल्ड अप अक्रॉस द कंट्री. वंदे भारत ट्रेन्स वैसे हाई स्पीड रेल का भी होगा, बुलेट ट्रेन्स भी आएगी. और दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट. Yeah. And government is making easier for foreigner to take e-visa for India.
बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, so I think that will also help. So more tourists will come from outside of India. Revenues भी ज्यादा Yeah, आएंगे. and one of the most interesting projects on the roadside which I saw recently, वो था कैलकाटा से बैंकॉक ड्राइव करके जाने का. मतलब there's a full BIMSTEC project which is coming up. तो आप कैलकाटा से म्यांमार के थ्रू थाईलैंड बैंकॉक पहुंच सकते हैं. Ah, so people can like plan this. We will go India, then Bangkok, then Thailand. That will also help, right? हाँ, मतलब इंडिया म्यांमार थाईलैंड पूरी रोड ट्रिप कर सकता है कोई. Exactly. Next question मेरा women को लेकर के है, because we keep reading a lot of policies, suggestion by UN and this kind of organization that women should play more active role when it's come to the GDP, and they should participate in a workforce and everything. But when it comes to India, we know the numbers are not great there. And even I was going through, like, you can say like almost 50% women are illiterate. लाइक अगर आप ढंग से बात करें, वैसे तो लिटरेसी रेट है 60%, बट दैट इज ओनली लाइक यू कैन राइट योर नेम वाला. तो जब विमेन स्किलफुल नहीं है, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करती, वर्कफोर्स में शायद 30% से भी कम है. तो डोंट यू थिंक लाइक इंडिया कैन चेंज थिंग्स देयर, एंड इट वुड बी बेटर फॉर आवर नेशन, एंड व्हाट वी कैन डू? No question. Yeah. Absolutely. So how we can change things around the women workforce के around? नहीं, इसमें मेरे को लगता है इट्स अ सोशल शिफ्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड. वो कहीं कहीं पे हुआ है, कहीं कहीं पे नहीं हुआ है. लाइक इट रिक्वायर्स अ चेंज इन माइंडसेट्स. आई थिंक इन मेनी रीजन्स, इन मेनी कम्युनिटीज, माइंडसेट इज की क्या जरूरत है, क्यों करना है. तो इसलिए वो वहां पे मतलब रोका जाता है लोगों को काम करने से. अगर कोई करना भी चाहे काम तो उनको रोका जाता है. और ये भी मेरे को लगता है ये भी सच है कि कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं काम. मतलब this is common in many sort of as a family becomes wealthier, then sometimes from a two income family you choose to become one income, double income. So you say ठीक है, I'm not working now, I want to sort of take care of my children or other things like that. So that is also a choice. I mean that's a reasonable choice which someone can make. I mean, but definitely, I mean, India needs to work on its women participation in the workforce. So I think one of the reasons why the number kind of also comes lower is that a lot of women are studying more. तो जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादा, जो पहले नहीं करते थे, क्या कॉलेज के बाद मास्टर्स करते हैं या फिर डॉक्टरेट भी करते हैं. तो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग मास्टर्स प्रोग्राम्स और इवन गोइंग टू कॉलेज, राइट. तो जैसे पहले शायद कॉलेज जाना भी नहीं था लोगों का. तो ये डेफिनेटली शिफ्ट आ रहा है. और मेरे को लगता है इन सर्टेन रीजन्स, इन सर्टेन कम्युनिटीज, more needs to be done to sensitize people कि if people want to work, they should be allowed to work, and उनके ऊपर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए कि काम नहीं कर सकते. एक मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर ही था कि वुमेन की मैटरनिटी लीव को लेके काफी बहस होती है, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि डबल एज स्वॉर्ड है. एक तरफ हम ये सोचते हैं कि इट विल मेक इजियर फॉर वुमेन टू वर्क, बट द सेकेंड टाइम भी आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि देन कंपनी विल फील बर्डन, एंड वो सोचेंगे हम क्यों किसी ऐसे एम्प्लॉय को रखें जिसको हमें इतने महीने के लिए छुट्टियां देनी पड़ेगी विदाउट मेकिंग देम वर्क. तो बट हाउ डू यू सी इट, लाइक व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? नहीं, इसमें कहीं मतलब in a balanced way something should be definitely be done. I mean, I'm not of the view कि we should have Scandinavia level policies. We are giving like several months off and paid leave and things like that. And that too, it cannot be a one size fits all. कि जैसे there are some companies which can do that. There are अब अगर कोई 10 जन की company है, it's a 10% or 20% small business. Then if we try to force fit such a progressive policy onto them, it may or may not work for them. And then आप जो बोल रहे हैं कि शायद उन लोग हायर नहीं करेंगे सोच के कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि like I said, many of these businesses are very running on very thin margins. They don't have that kind of leeway कि they can afford such a kind of policy of leave and so on, maternity leave. And it's true on both sides. I mean, nowadays there's also a lot of talk that paternity leave should be given. And in fact, some companies have started doing that. They're giving paternity and maternity leave. But I don't think we should have a one size fits all nationwide or even some state level law which says that this should happen. I think we should try to agree on what is the minimum that can work for most people. That will probably not satisfy everyone.
but what is the minimum? We should try to go with that. And then on top of that, obviously, firms which offer better maternity leave, they will become more attractive for talented people, for talented women to join. So let the marketplace also kind of figure it out. Khalid, you I mean, want to ask? I'm sure many women will make decisions based on this. Ki they have a better kind of better leave or better benefits in this company versus that. So let the market forces kind of figure that bit out. We should not try to go for the highest possible, but we should try to do what is feasible for most people. Rajiv, as India takes its flight now, and as investors like you, and obviously even the big companies in the world are saying this is going to be India's decade or century, we'll come to the challenges now, right? We look at states like West Bengal and Punjab, for example, which have these massive debts, right? They owe to the center, and manufacturing, or they've not taken the flight like an industrialized Gujarat or Maharashtra have taken. How much is that going to affect us and dent us constantly from actually achieving the true potential? Because even when, of course, it's all linked to politics. The politics there is about freebies and socialism, and we saw what is happening in Karnataka, and free rides, which ultimately somebody is paying for it. It's the taxpayer paying for it, and there's nothing of value that's getting created. So every state, you can't assume the mindset will be that of a Maharashtra and Karnataka. And is that going to stop India from, like, ultimately those are going to be dents which are constantly it has to live with? No, so one of the challenges I think India has always had is even economic progress has not been regionally balanced, in the sense that the western part of the country, the southern part of the country are generally better than the north and the east. And the east in particular, so if you look at Bihar, West Bengal, Odisha, even the northeast states, so historically they have always kind of lagged behind. And it is for the reason that you're pointing out. The policies there have been completely, in a way, anti-industry and anti-business. And frankly, in some of these states, there's also been a severe law and order problem, right? I mean, we all know what Bihar went through in the 1990s. It was the worst of the jungle raj that time, and frankly, who's going to put money in a state like that? Like, it's not even worth thinking about. So definitely there's a case for better government, better policies. But then, I mean, people keep voting for the same kind of idea. So then what can one say? I mean, this is what they want. Ultimately, we live in a democracy. So if this is what the people want, I mean, it is a setback for that region for sure. And definitely a setback for India as well, because if we had better policies in most states, then obviously all states would be growing slightly better, and thus the national growth rate would also be that much better. But yeah, I mean, it's a tough one. Like, ultimately, it's about convincing people that your tomorrow is your tomorrow will be better if you do this today, and sometimes people don't believe that. So that's always a challenge in any democracy, that कोई क्यों माने कि मेरे को अगर आज ये मिल रहा है मैं वही ले लूं, कल किसने देखा है, मतलब लोग सोचते हैं ऐसे, मतलब who knows क्या होगा कल. तो जो अभी है, अभी ये सामने वाला जो दे रहा है सो ले लो, कल खराब हुआ तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? So that short term kind of thinking is always there among voters, and it just comes down to whichever leader wants to sort of take that kind of slightly longer term view, they have to convince. उनको लोगों में ये भरोसा पैदा करना पड़ता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भविष्य और उज्जवल बनेगा. जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव जी, वो बिजनेस डिफिकल्टीज के ऊपर है. तो जो डेटा मेरे सामने है उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक के लिस्ट में इंडिया 190 कंट्रीज में ईज ऑफ बिजनेस में 130 आता है, विच इज वेरी bad performance since we see. So how we can change it, I mean, and why it is important to change it also? So important तो मैं ये बोलूंगा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग रजिस्टर्ड फॉर्मेट में काम करें. जैसे हम बात करें थे फॉर्मलाइजेशन की, तो हम चाहते हैं कि लोग फॉर्म रजिस्टर करें, अपने टैक्सेस भरें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब फाइलिंग्स वगैरह करें, रिपोर्टिंग करें. तो इसलिए जरूरी है कि उनके लिए ये बर्डन नहीं हो, क्योंकि अगर वो बर्डन रहेगा तो लोग बोलेंगे फिर क्यों करना है सर, मतलब हम इनफॉर्मल वे में ऑपरेट कर रहे हैं. तो इसलिए
it's important to get it right from the point of view of continuously broadening the tax net, making it viable for people to join, so that it is not too difficult for them to join, and so on. And the reason, one of the big reasons I think we are behind in that ranking is that we are very bad on contract enforcement. तो इंडिया में हमारा रैंक शायद लास्ट 5 में आता है, if I remember correctly. If you look at the specific ranks on enforcement of contracts, because of the court system in the country and the kind of slow pace, मतलब anyone who's had to do that bit will immediately recognize how bad it is for citizens. कि अगर कोई कारण से किसी को जाना पड़ गया तो वो इतना टाइम लगता है और इतना धीरे धीरे होता है काम कि it defeats the logic only of having a swift resolution. मतलब it's just not there. तो इसलिए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, खास करके छोटी कंपनीज के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अगर सपोज आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और सामने वाले ने आपको पैसे नहीं दिए तो आप क्या करोगे? कहीं कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट प्रोसेस जो है दैट विल बी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें आपका इतना समय खराब होगा कि शायद आप सोचेंगे छोड़ जाने दो. तो इसलिए एक तरह से दिस ओनली enhances mistrust in the society. And then people only try to work with whom they know or whom they trust. क्योंकि they know कि अगर कोई totally unknown person है, मैं उसके साथ कैसे ट्रांजैक्ट कर पाऊंगा. तो वो एक तरह से वो एक सब स्केल बिजनेस ही रह जाता है और वो शायद वो अपने ही एक नेटवर्क में रह जाता है, वो शायद उससे आगे नहीं बढ़ पाता है. तो इसलिए actually fixing that is probably one of the biggest reforms that are necessary. I mean, generally sort of improving enforceability of contracts in India. That will probably require court capacity to be increased. We should look at other kinds of mechanisms. I mean, this is a big subject. I mean, ये address करना is probably one of the really important things which we have to get right next 3 to 5 years. Do you have any question? Yeah, wanted to also understand that this is slightly politically also tangentially related, that all these attacks that we see with regards to India and the Western media, the other side of the argument is that it's just the growing clout of the economy. So behind all these political divides and this fear mongering that state of affairs are really bad is because the powers do see that India now is reaching, hitting the 3 trillion, 4 trillion, then 5 trillion. And there is a saying that, once India achieves a certain figure, 5 trillion and beyond that, which it will, then this will also reduce, because this ultimately is more of an economic war sort of. So how do you look at it on those two fronts? I do think so. India has very good relations with most of the Western countries. I think, in fact, we have excellent relations with almost everyone. Right. But having said that, I mean, I've always had this view, I've written about it as well. Nobody likes to give space to somebody else, right? If you're number 3 or number 4, कोई क्यों चाहेगा कि कोई और आ जाए number 3 बनने के लिए? So they will be like, ठीक है, I mean, they might try to keep you down in different ways, but then probably they don't realize or they can't succeed that for too long. Because obviously if the Indian government keeps doing what is good for the Indian economy, there's no way that some external force can stop India from growing. It's really up to what policies we adopt as a country. So if we keep getting it right, then people will have to yield space. But this is the truth of the world. I mean, no country and this is true not just at a level of countries, but even in industries, even at other kinds of competition. I mean, those who are number 1 and number 2 won't want someone else to become a challenger to them, right? In any field. So I do think that if we keep doing what we are supposed to do to support our growth, to support our economic progress, then the world will slowly come around. I mean, what can you do, right? Like, you can't really at least frontally stop someone from succeeding in that way. So it is very much like I think something for India to kind of keep working on. I mean, there will be different forces which will try to emphasize the problems that are there in the country. But then hopefully the leadership over a long period of time in India, at least in the next 10-15 years, will continue to not give emphasis to that, ignore the noise, and keep doing what we need to do. Amna, you have a question? Yeah, I wanted to ask about inequality
इसके ऊपर काफी डेटा है कि वो बढ़ी है घटने की बजाय। काफी ज्यादा गैप आया है इनइक्वालिटीज में, लाइक बहुत गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो आई वांटेड योर व्यू ऑन दैट। ऑल्सो आई वांटेड टू ऐड समथिंग, सिंस आई एम लिविंग हियर इन लंदन, तो यहाँ पे भी कॉस्ट लिविंग क्राइसिस बहुत ज्यादा है। एंड व्हेन आई लुक एट इट, देन आई ऑल्सो रियलाइज लाइक in India, if you are a middle class, you have a good life. I mean, one can criticize it कि हम बाई और सर्वेंट रख लेते हैं बहुत कम चार पैसे दे करके उनको, जो कि आप यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर मिनिमम वेजेस टू पे। चाहे आप किसी को भी रखो, पर आवर आपको उतना देना पड़ेगा। बट उसकी वजह से यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कॉस्ट लिविंग कॉस्ट क्राइसिस बहुत है, एंड एवरीवन हैज टू लिव लाइक बहुत हार्ड वर्क है। लाइक जैसा हमें लगता है इंडिया से, वैसा लाइफ नहीं है यहाँ पे। एज अ मिडिल क्लास यू हैव अ वेरी गुड लाइफ, बिकॉज वही उसी इनइक्वालिटीज की वजह से शायद। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, लाइक हाउ वुड यू सी इट? इज इट गुड फॉर इंडिया, बैड? एंड पावर्टी तो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। नहीं, ऐसे अगर अगर पोस्ट 1991 इफ यू लुक एट लास्ट 30 years, तो वी हैव मोर और लेस इरेडिकेटेड एब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंडिया। इट्स अच्छा। ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट। मतलब कि जो गरीबी थी हमारे देश में 1980s में, 1970s में, अब शायद मतलब आज के दिन में लोग उसको याद नहीं करते हैं, बट शायद करना भी नहीं चाहिए यार। बट जिस तरह की गरीबी थी पहले हमारे देश में, अब वो नहीं रही, ये एक फैक्ट है। और रही बात इनइक्वालिटी की, तो ये मैं जरूर मानता हूँ कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी की, सपोज कोई जो गरीब है उसको कहीं ना पढ़ाई मिल रही है, ना हॉस्पिटल मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और someone who's rich can just do anything they want, right? That extremity is never desirable in society. So there are ways to address it, right? And I think a progressive tax system is part of that. वो हमारे यहाँ already है. I think Indians who are high income earners, they're already paying heavy taxes. और अपने जो देखते हैं, जो इस तरह के आंकड़े आते हैं कि इतनी इनइक्वालिटी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. So when we look at those numbers, we should always remember that wealth is not income. So someone owning a sort of company, and then from that company, that person is deriving certain wealth level, that is not the same as that person's income. So on income, they are being taxed. But on wealth, probably chances are they cannot even use that wealth, right? On paper, they have a certain shareholding that has a certain value, but how do you use that? And whenever you are drawing income, you are paying taxes on it. तो पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि one of the great things about capitalism is that the rich people and poor people use the same thing. So this is one of my favorite thinkers, the great artist Andy Warhol. He had written about this very evocatively, that he said America was the first country in the world which created the tradition that the bum on the street and the president will have the same thing. So if you want a Coke, you will get a Coke. It doesn't matter if you're a president. It doesn't matter if you're a billionaire. You will get the same Coke. So that culture, I think, was not there in India earlier. Whether you are a low-income group person or whether you are an ultra-high net worth individual, you have the same product. That has only started happening in the last 20, 30 years in some ways. So if you have a geo connection, you could be working as a driver somewhere, you have a geo connection. You could be a tech, very successful tech founder, you'll have a geo connection. Both people are using the same product. That is the beauty of capitalism in some ways. And I think this phenomenon is becoming more widespread. The same kind of products are being used by everybody. So that is a great equalizer. I mean, if we go back 30 years, people didn't even have phones. You had to be somebody to have a landline. You had to be someone even more powerful and important to be able to make long distance calls. From there, we have gone to a place where someone using a 5,000 rupee phone and someone using a 30,000 rupee phone, they are probably having the same experience in their communications. So that is a great leveler in my view. And I mean, we can always say that there is inequality. I mean, every country deals with that. And like I said, we should find the right instruments to deal with that. Economic growth is criticized as creating inequality, which I don't agree with. I think we should be very careful of that argument, because growth actually helps erase poverty. So we want people to be able to have a chance to escape that low income
situation. And as long as we have that social mobility in our society, I think India will just be fine. Where if someone is educated, someone is skilled, वो अपने कायदे से काम कर रहे हैं, either as an entrepreneur or as a professional somewhere, then they can keep earning and they can keep rising. So that's the kind of society we want to have. So, when do you think we're going to touch 5 trillion? I think so. Even the government had released. I think the CEA had said, Chief Economic Advisor, he had said 2027-28. So I think that should be eminently feasible. I think another 3 years, 3.5 years, we should add $1 trillion more to our output. So we're looking at the next 3 decades being India's decade with regards to the economic. No, I think there's been a lot of like bullishness and celebration on that, but I do think that policy stability is important. We need to continue having like a safe, secure, stable country in terms of the internal sort of order and national security. I think again, like it's one of those things. If you don't talk about that anymore because it's so successful. आज के दिन में कोई सोचता भी नहीं इसके बारे में कि मतलब if we go back to 2007, 8, 9, that period, the number of terror attacks that were going on in the country were just shocking. Absolutely. I mean, I had lived through that. I was in India when that was going on, 26/11, and even before that, and even after that. Right. So we should not take order and security for granted. So a lot more things need to be continuously done for 20-25 years for us to actually achieve what you're talking about. So and that, I mean, comes down to having leaders who recognize that and having leaders who do their job in such a good way, we take their results for granted, which is I think somewhere happening now. Right. We had discussed that in one of our episodes that nobody talks about this amazing fact that for the last 9 years, and I hope continues for hundreds of years, no non-conflict zone of India has faced a terror attack. That's remarkable, right? No non-conflict, no big city, which used to be a norm for 10 years. Yeah, no, it had really gotten out of hand actually. In the 2000, that 2005 to 2010 period was just terrible. Absolutely. So I mean, few months in every major city of India. जहाँ लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है, तो उन लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे और क्या सोचेंगे आगे के बारे में? लोग सोचते हैं just protect yourself and sit where you are. So we want that positive environment requires like a certain, stability when it comes to internal security and national security. I think what we can sum it up is, of course, the great UPI revolution, the highway revolution, the infrastructure with regards to the airports, roads, rail, and as Rajeev Mantri and so many big firms like Goldman Sachs and everyone betting that the next 3 decades are going to be India's economic growth decades, and India is the place where you need to invest. So thanks a lot, Rajeev, for giving us a masterclass in understanding the complexities, the economics, the politics linked to it, the brute cold reality, and helping us shaft between what is real and practical, realistic, than the whole emotional thing. So thanks a lot, Rajeev, for helping us on this episode. Thank you. Thank you, Khalid. Happy to be with you guys. Thank you, Amna. Great to chat. Thank you. Bye-bye. Bye.